Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. We are going to do today is very important MCQ question for a class 8th science and chapter here fiction. There is the most important MCQ here and which will be a very important for the exam point of view and it will be important for the competitive exam also. Let's see what is our topic today. Today we discussion most important chapter here fiction. The fiction here class 8 CBSE NCERT science here. And today Tripan Study Center take a most important MCQ here. And this MCQ is there exam a point of view and also for the new syllabus. That's important here. And let's see question here. You know that the question here, whenever the surface is a contact, tend to be moved or the moving with the respect to the each other. The force of friction comes into play. You know that is question is very important. कि जब भी संपर्क में आने वाली सतह एक दूसरे के समकक्ष गति या गति करती है तो घर्षण बल काम में आता है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि जब भी हम संपर्क में आने वाले सतह के एक दूसरे की सापेक्ष गति करती है तो घर्षण बल कम में आता है। क्यों, क्या रीज़न है? तो ऑप्शन है A only if the object are solid, B only if one of the two object is a liquid, and C only if one of the two object is a gaseous state here, and D irrespective of whether the object are solid, liquid or gases. Question is very interesting. You know that the contact tend to move with respect to each other. There are three of state: solid, liquid, gas. It means the option D is correct here. Option D is correct, irrespective of whether the object are solid, liquid, or gases. That's important here. You know that next question on your screen. Question here, very interesting. Friction aways. फ्रिक्शन अवे, घर्षण हमेशा कैसा होता है? जो घर्षण होती है वो आखिर कैसा होता है? ऑप्शन ए पोज द मोशन, बी हेल्प द मोशन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नॉन ऑफ दिस. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. फ्रिक्शन अवे, you know that, but answer here, the friction away poses the motion. The friction away poses the motion. It means to the option A is correct. Option A is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here, friction can be reduced by using. You know that the friction can be reduced by using. डैश के प्रयोग से हम घर्षण को कम किया जा सकता है. हम किसके उपयोग से जो है घर्षण को कम कर सकते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. घर्षण दोस्तों ये होता है, अगर हम चलते हैं पृथ्वी पर तो कहीं ना कहीं हम घर्षण के कारण ही चल पाते हैं. यानी फ्रिक्शन ना होता तो शायद हम चल नहीं पाते. क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे और पृथ्वी के बीच जो है चलने के सक्षम बनाता है. और मान लीजिए कहीं पेट्रोल डीजल गिरा हुआ होता है तो आपका वहाँ पर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है और आप धड़ाम से गिर जाते हो. तो फ्रिक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर हम फ्रिक्शन कम करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है. द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग. Option A oil, B grease, C powder, D all of these. You know that
reducing of friction, there is use of oil and the grease also. Many types of bicycle, scooter, motorcycle, there is use of wheel, there are grease and oil. There is a maximum here surface is a smoothly. It means the oil is used and powder is used. Any times of you use a carom board play, they use a powder because yours carom boards easily is a move here. You know that mean to here option A oil reduce friction, B grease is a reduce friction, and C powder is also reduce friction. It means to the option D is correct. All of these oil, grease, powder reduce by the friction. D option is correct for this question. And let's see next question here. You know that next question on your screen. Question here. To sharpen the blade of a knife by rubbing it against a surface, which of the following will be a most suitable? That's an important question here. कि चाकू के ब्लेड को किसी सतह पर रगड़ कर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से हम कौन सा उपयुक्त जो है पदार्थ का उपयोग करेंगे? हम चाकू को तेज करने के लिए हम उसको किस पे रगड़ेंगे? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण व साधारण है। क्वेश्चन को जो हम चाकू को तेज करने के लिए हम इन चार ऑप्शनों में से किस पे रगड़ेंगे कि चाकू जो है काफ़ी तेज हो जाए? दो ऑप्शन है यहाँ, ए स्टोन, बी प्लास्टिक ब्लॉक, सी वुडन ब्लॉक, डी ग्लास ब्लॉक. You know that is a question is very interesting and important for the exam point of view. To sharpen the blade of the knife by rubbing it against a surface, which of the following will be most suitable? The answer directly is stone. You know that the sharpness of knife you are rubbing for the stone. The stone there is take a sharpness of the blade. It means the option A is correct. Option A is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. If we apply oil on a door hangs, the friction will be. यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाएंगे तो घर्षण क्या होगा? दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों का दरवाज़ा आप नहीं खोलिएगा तो जब आप खोलिएगा तो खोलने में बड़ा कठिनाई आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस दरवाजे में तेल डाल देते हैं। अब क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड है कि अगर हम डोर के जो है हैंगल्स में अगर हम ऑयल लगा देते हैं तो घर्षण क्या होगा? घर्षण क्या होगा? अगर आप कुंडे में अगर ऑयल अप्लाई कर देते हो जिससे दरवाज़ा जो है आपके अटैच होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या करेगा? दो ऑप्शन है, इंक्रीज अ फ्रिक्शन, बी डिक्रीज अ फ्रिक्शन, सी disappear altogether, and D will be remain unchanged. Question is very interesting and important for the exam point of view. If we apply the oil door handles, there a friction will be a. What is the answer to this question here? It means the option. The frictions here decrease. Friction is here decrease. The B option is correct for this question. B option decrease. The friction will be a decrease. And let's see next question here. Next question
on your screen, question is very clear. Lubricant. What is a lubricant? यानी चिकनाई क्या होता है, चिकनाई से क्या होता है, चिकनाई हम उपयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन बहुत से हैं। लुब्रिकेंट का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्या रीज़न होती है। ऑप्शन है रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन, बी इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. Lubricant. Know that lubricant here or reduce of friction. A option is correct this question. Lubricant or reduce of friction. That's important here. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Complete the sentence. Complete the sentence. Friction away. Friction away. वाक्य को पूरा करें, घर्षण हमेशा ही. The option here helps the motion, B oppose the motion, C both of these, and D none of these. Question is very interesting and very simple here. Complete the sentence. Friction away, pose the motion. The friction away, pose the motion. It means the option B is correct. Option B, pose the motion. B option is right. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which is the streamline object? Which is the streamline object? यानी देखा जाए तो सुव्यवस्थित वस्तु कौन सी है। सुव्यवस्थित का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जिसके लिए फ्रिक्शन जो है कार्य करता नहीं है, यानी जहाँ पर घर्षण बल नहीं कार्य करता है वो कौन सी स्थिति है। सुव्यवस्थित स्थिति का मतलब होता है कि वह कौन सी स्थिति है जहाँ पर घर्षण बल कार्य नहीं करती है, घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन हियर बोट्स, बी एरोप्लेन, सी शिप्स, या डी ऑल ऑफ दिस। यू नो दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द ऑप्शन इज अ बोट. द बोट इज नॉट अ यूज टू द फ्रिक्शन. इट मीन टू द वाटर इज नॉट अ work in the friction. An aeroplane, there is a flight for the sky. It means there is not a friction here. And ship also the not use the friction. It means to all of these question is correct here. D option is right. Which limit is the object here, boat, aeroplane, ship. It means D option is correct, all of these. This is correct. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Smooth surface has. Smooth surface has. यानी देखा जाए तो चिकना सतह किसे कहते हैं, चिकना सतह क्या होता है और चिकना सतह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बहुत है, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो बहुत आसानी से आप दे दोगे कि स्मूथ सरफेस हैज ए लेस फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन, सी सम टाइम लेस एंड सम टाइम मोर, and all of this. Question is very interesting and important also. You know that smooth surface is a less friction. Smooth surface is a less friction. It means to the friction not a use a smooth surface. The option A is correct. A less friction. A is a correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which one of these characteristics does a smooth surface has? Which one of these characteristics
does a smooth surface has? चिकनी सतह में इसमें से कौन सी विशेषता होती है? आपने चिकनी सतह देखा होगा, यानी फर्श पे देखा होगा, तो फर्श की क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिकनी सतह में इनमें से कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन है लेस फ्रिक्शन फोर्स, बी मोर फ्रिक्शन फोर्स, सी सम टाइम लेस सम टाइम मोर फोर्स, these all of these. Question is very important and very interesting here. You know that the smooth surface has a characteristics as a less friction force. It means to the A option is correct. Less friction of force. A option is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Friction is a काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो घर्षण क्या है, घर्षण क्या है और घर्षण किस बेस पे कार्य करता है। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। तो ऑप्शन देखें, ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझना भी ज़रूरी है कि फ्रिक्शन इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आंसर है कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन वर्क here contact force. It means to you walk on a floor. The apply here contact force. Your foot and force is contact to each other. There is it mean to the B option is correct. There is contact force. B option is correct. Contact force. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. What kind of substance are known as a lubricant? What kind of substance are known as a lubricant? किस प्रकार के पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है? स्नेहक का मतलब दोस्तों होता है लुब्रिकेंट, जैसे चिपचिपाहट होती है। तो स्नेहक का मतलब मत कंफ्यूज होना, लुब्रिकेंट कहते हैं। और लुब्रिकेंट पदार्थ वो होता है जिसमें हाथ में रखो तो चिपचिपाहट सा लगता है। जैसे आप घर में अगर ऑयल हाथ में रखो तो उसमें चिपचिपाहट सी आती है, यानी फैट होती है। तो किस प्रकार के पदार्थ को हम स्नेहक कहते हैं? द ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, बी डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, सी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शन, एंड नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। Question is very interesting. What kind of substance known as a lubricant? You know that answer is clear here. Decrease the friction. It means B option is correct. Decrease of friction, B is correct. Let's see next question here. The next question on your screen. Question is clear. Fluid R. द्रव्य क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है, द्रव्य क्या होता है? क्वेश्चन क्लियर है। द ऑप्शन है फ्लूइड आर गैसेस, बी लिक्विड, सी गैस एंड लिक्विड बोथ, एंड इन नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो दैट फ्लूइड द सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड LPG gas used in a houses. The fluid it mean to the you call a LPG gas, but it was a liquid form. It means the option C is correct. The fluid are gaseous and liquid both here. The fluid are gaseous and liquid both. It means the option C is correct. Option C is correct for this question. This topic was till this. We will be do their next topic in the next part.
If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.